In this lecture, we will discuss about another phylum, that is phylum Mollusca. Phylum Mollusca includes all soft-bodied animals. इसमें मोस्टली जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो हैं वो शामिल हैं जो जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडीड है, लाइक स्नेल्स, slugs, etc. It is the second largest phylum of invertebrates. Invertebrates का वैसे largest phylum जो है वो arthropod है, second largest जो है वो mollusk है. As it contains many species, it contains more than 50,000 species. इनमें से कुछ species जो हैं वो snails हैं, some are slugs, some are bivalve clams, इवन हाईली एक्टिव सिफेलोपोड्स भी इनमें शामिल हैं जैसा कि ऑक्टोपस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट some general properties of phylum Mollusca. First property is organization. So they have triploblastic organization. Triploblastic means they have 3 body layers which include endoderm, ectoderm and mesoderm. Next property is symmetry. They have bilateral symmetry. Body cavity. Regarding the body cavity, they are coelomates, means they have a body cavity called coelom. Next property is body covering. Their body is covered by a glandular epithelium called mantle. इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को, and that covering is basically a glandular, means it secretes something, and covering's name is mantle. It secretes calcareous shell and that shell is protecting. शेल जो है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल हार्श कंडीशंस के अगेंस्ट. वो कंडीशंस जो है वो टेम्परेचर हो सकती है, विंड हो सकती है, एक्सेट्रा. और साथ ही प्रीडेटर से भी इनको जो है वो बचाता है. शेल का काम प्रोटेक्शन देना और प्रीडेटर से बचाना है. जैसे जैसे मोलस्क की बॉडी जो है वो ग्रो करती है तो लोकोमोशन में शेल जो है वो एक हैंडीकैप के तौर पे बिहेव करता है. हैंडीकैप मीन्स इट प्रिवेंट्स द लोकोमोशन. As the bodies of the mollusk grow, shell is replaced by a bigger one. Because shell is handicapped to locomotion, therefore in some organisms, in some animals of this phylum, the shell is reduced or lost. या उसको reduce कर दिया जाता है या उसको completely जो है वो lose कर दिया जाता है to maintain the locomotion. Next property is habitat. There are two kinds of habitats. They may be aquatic or may be terrestrial. Aquatic में कुछ जो है वो fresh water है and some are marine. They are exclusively aquatic. ये MCQs आ सकता है. और कौन सी क्लास जो है वो exclusively aquatic है? Cephalopoda. While some are terrestrial like land snails, slugs, etc. और terrestrial में ये completely dry environment में रहते. They live in moist places. Next property is segmentation. So इससे पहले जो हमने phylum study किया था, phylum Annelida, that includes the worms that were segmented, but here is no segmentation present. So segmentation is absent. But यहाँ पे जो body है वो उसको different parts में divide किया गया है. First part is head, second part is ventral muscular foot. Ventral side पे, body की ventral side पे muscular foot होते हैं for the movement of the body. And the third part is a dorsal visceral mass, जिसमें most of the internal organs जो हैं वो शामिल होते हैं. तो head, then ventral side पे muscular feet for movement, and dorsal visceral mass that contains most of the important internal organs. This point is very important as MCQs, that they have rasping-like tongue with many honey teeth in their mouth cavity called radula. Radula is basically the characteristic of phylum Mollusca. MCQ point of view say this is very important. Then we will discuss about organ systems. First one is digestive system. Likewise, annelids, they also have tube-like digestive system, means a digestive system with two openings. One acts as mouth and second acts as anus. Second system is excretory system. There is a tubular
excretory system present in mollusks, and that excretory system is called nephridia. And in case of mollusk, they are paired, so they have paired nephridia. Then circulatory system. All species or all classes in phylum Mollusca have open type circulatory system, means they have sinuses. Sinuses are basically open spaces through which blood passes out in case of open type circulatory system. एक्सेप्ट सिफेलोपोडा. सिफेलोपोडा एक ऐसी क्लास है जिसमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विच क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का has closed type circulatory system, so that is cephalopoda. Respiratory pigment in case of mollusks is hemocyanin. Hemocyanin is blue in color because of the presence of cyanide group. It appears blue. This is also a characteristic of phylum mollusks. And this is the first phylum in kingdom Animalia that develops a respiratory system. Respiration takes place with the help of gills. Most of the organisms में gills के through जो है वो respiration होती है. But some species जैसा कि snails है हमारे पास, snails में जो है वो mental convert हो जाती है lungs में. So snails में lungs के through जो है वो respiration होती है. Nervous system consists of 3 pairs of interconnected ganglia, and part of the body consists of 1 pair. Means out of 3 pair, 1 pair is present in head region, 1 in foot region, and 1 pair is present in body region, and they are interconnected to each other. So locomotion के लिए इनके पास जो है वो special structures हैं that are called muscular foot, and जिनमें muscular foot हैं they move very slowly move करते हैं, और कुछ में जो है ये एब्सेंट होते हैं, therefore they are sessile. Reproduction इनमें sexual type of reproduction है, and in most of the species sexes are separate, and during their life cycle trochophore larva is also produced. Next is the classification of mollusks. Basically phylum mollusca को next जो है वो 6 classes में divide किया गया है, classify किया गया है, लेकिन जो मेजर क्लासेस हैं वो 3 है, जिसमें इंक्लूड है क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास बाइवेल्विया, एंड थर्ड वन इज क्लास सिफेलोपोडा. द फर्स्ट क्लास इज क्लास गैस्ट्रोपोडा. देयर फर्स्ट कैरेक्टर इज दे आर एसिमेट्रिकल, मीन्स इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं. दे यूजुअली हैव कॉइल्ड वन पीस शेल. इनके पास एक ही शेल होता है और वो भी कॉइल्ड फॉर्म में होता है. हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. इनमें कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल है और कुछ जो है वो इनमें एक्वेटिक मोड ऑफ हैबिटेट है उनका. इनमें जो एक्वेटिक हैं दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, वाइल जो टेरेस्ट्रियल हैं दे हैव lungs for respiration. So here these are the characteristics of organisms included in class Gastropoda. Examples are, this is called Helix aspersa. It is also called garden snail. This is the most common land snail on earth, that is called garden snail. And this is called Limex. It is also called slug. It belongs to slug family, and it is called Limex. Next class is class Bivalvia. क्लास गैस्ट्रोपोडा में जो ऑर्गेनिजम्स थे दे वर एसिमेट्रिकल, वाइल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास बाइवेल्विया आर हैव बाइलेटरल सिमेट्री. दे आर मोस्टली एक्वेटिक. दे हैव 2 पीसेस ऑफ शेल्स. इनके पास 2 पीसेस होते हैं शेल्स के, और इसी वजह से इनको बाइवॉल्व्स कहा जाता है, जबकि क्लास गैस्ट्रोपोडा में सिर्फ 1 पीस था शेल का. बिकॉज दे आर एक्वेटिक in their habitat, therefore they respire through gills. क्योंकि ये एक्वेटिक है इसलिए ये गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, and that are specific gills called plate like gills. There are 3 kinds of bivalves. First of all, these are mitellus. Mitellus include marine mussels. You can see that there are 2 pieces of shells. ये इसका ओवरऑल व्यू है, ये उसको थोड़ा सेपरेट किया है, और ये उसका इंटरनल व्यू है ये वाला. एंड दिस इज
a freshwater mussel that is called Anodonta. Anodonta is a freshwater mussel. It also consists of two pieces of shells. And this is the most beautiful and the most delicate type called Ostrea, also called oysters. Very beautiful pearls that are used in ornaments and for various purposes. So commercially they are very important. The next class is class Cephalopoda. They also have bilateral symmetry like bivalves. They are also aquatic. So they also have shell, but the shell is in most of the species is reduced. मीन्स इंटरनल शेल जो है वो मौजूद होता है बट एक्सटर्नली जो है वो शेल इनमें मौजूद नहीं होता और मोस्टली स्पीशीज में जो है वो शेल एब्सेंट होता है. एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर हाईली एक्टिव एंड डेवलप्ड. Here are some examples of the organisms included in class Cephalopoda. This is called octopus. That is a very developed and highly active invertebrate. Octopus के बारे में कहा जाता है that इसका ब्रेन जो है वो exceptionally large होता है और developed होता है for an invertebrate brain. And it also endows the octopus with highly developed capabilities to learn and to remember everything. In laboratory, octopus can rapidly learn to associate certain symbols, and it can also open a screw cap jar to obtain food. This one is loligo. It is also called squid, and this is a cuttlefish, maybe called as sepia. MCQs आ सकता है. Cuttlefish is a. So always remember that cuttlefish is not a fish. It is basically a mollusk. Same as jellyfish is not a fish. It is basically a cnidarian. So MCQ point of view से ये important है. Now we will see the importance of various mollusks. पहले हम harmful mollusks के बारे में स्टडी करेंगे जिनमें शामिल हैं slugs and some shipworms. तो जो स्लग्स हैं, स्लग्स आर इंजूरियस टू गार्डन्स. दे आर इंजूरियस टू गार्डन्स एंड कल्टीवेशन. जो फसलें वगैरह होती हैं या फिर जो बागात वगैरह होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाती है. वाइल शिपवर्म, वी हैव अ शिपवर्म कॉल्ड टेरेडो. इट डैमेजेस द वुडन पार्ट्स ऑफ शिप्स. और जो स्लग्स हैं ये गार्डन स्नेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द roots of the plants and by cutting their roots, their leaves, etc. In addition to harmful mollusks, there are some mollusks that are very beneficial for humans as well as other organisms. Beneficial mollusks. Large number of oysters and mussels are used as food in many countries like Far East, Europe, and America. Moreover, shells of freshwater mussel are also used in button industry for making beautiful pattern on the buttons. और जो शेल्स है ऑयस्टर्स के उनको टार के साथ मिक्स करके रोड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है अमेरिका में. जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कुछ ऑयस्टर्स जो हैं वो वैल्यूएबल पर्ल्स की फॉर्मेशन करते हैं एंड दीज पर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल and very expensive. They are used in jewelry items and for making various decoration pieces, etc. So this is an overview of the classes included in phylum Mollusca.